Hello everyone. Hi guys. So I'm just waiting for all of you to join the session. Hello everyone. I just want that if you are actually watching me, am I audible to you or not? Just let me know by actually saying me, hi ma'am, hello ma'am. Come on dear ones. Where are you all? Okay. Hello Rahul. Good afternoon. Hello Mr. Methilides. Okay. Hi Ramakrishna. Hello, good afternoon. Hi, Rohija. Hello, Krishna. Good afternoon, my dear ones. Welcome to this particular session. A very good session. I mean to say an exciting session on inorganic chemistry. Fine. Hello, Mr. Sarde. Good afternoon. Hi, Ashutosh. Good afternoon. Welcome to the session. So, guys, I just want to ask you one question, that why are you late for the class? Every time, actually, in the end, I actually say you that you need to be there sharp at 3 p.m. So why are you all late to the class? You know what? I'm the first one to be in the class. Okay. Well, now onwards, I really don't want that any one of you should be late for this particular class, because see, if I'm coming over here, I am here for you guys. Fine. So you should be present in advance. Fine. So, hi Sophie, hello Sheila ji, good afternoon, welcome to this session. And I believe again that with energy, in an enthusiastic state, okay, in an energetic state, in an in a very high josh, you all have come here to attend this particular session of inorganic chemistry. Yeah, Rahul, I'll be starting it very fast. Wait a minute. So, my dear ones, I'm Rakhi, your mentor for this session. So, come on dear ones, let's start our session. Inorganic Chemistry Phase 4 JEE Mains 2021 important questions. So what all particular chapters we will be covering by actually talking about the questionnaire part here in this session. It's the P block elements we are going to talk about, S block elements, D and F block elements, salt analysis, coordination compounds and environmental chemistry. So these are all the topics we are going to cover through the questionnaire parts we are going to discuss over here in this session for all of you. Okay. Hi Mr. Anup. Good afternoon. Good afternoon. So dear ones, fasten up your seat belts and come along with me in this particular journey. But before that, if you like this session, hit the like button, subscribe the channel for the further notifications of the classes going to come over here on the channel. And yeah, do share this particular session. Fine, do share this particular session among your friends, your peer groups, so that they can also have the advantage of attending this particular session. Okay, dear ones, here we go with the very first question. So, be ready for it. Hello, Mr. Vedant. Good afternoon. Welcome to the class. So, the question is in front of you. You need to actually talk about the incorrect statement. The incorrect statement is F2 is more reactive than ClF. F2, fluorine is a stronger oxidizing agent than Cl2 in an aqueous solution. On hydrolysis, the ClF forms HOCl and HF, and D says chlorine is more reactive than ClF. So dear ones, just let me know and bombard the chat box with your answers. Come on dear ones. Okay, fine. तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है. Fluorine, okay, fluorine is reactive more than ClF. Fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine in aqueous solution. On hydrolysis, ClF forms HOCl and HF, and D says that Cl2 is more reactive than ClF. So Gaurav Singh's Om Patil, they are saying that it's option number A. Rahul Yadav is also saying it's option number A, which is incorrect. Which is incorrect. So what should I say about it? Okay, read the question nicely and then let me know the answers of the questions. Fine.
Come on, dear ones, let me actually tell you. See, over here we are talking about interhalogen compounds. Sheila Nathji has said that it's option number D. Okay. I'll note it down that Sheila Nathji has said it's option number D. Well, my dear ones, I want to say that except fluorine, F2, if I just talk about, reactivity of other halogen compound is less than interhalogen compounds. Okay, so if I just talk about the reactivity order, basically, if I just talk about the reactivity order, so it's the fluorine which is more reactive, then comes the interhalogen compounds, and then comes the another halogen compounds. Fluorine, interhalogen compounds, and the rest of the halogen compounds. Okay, halogen molecules are actually I need to talk about. So yeah, Gaurav Singh, wait, just have patience. I'll let you know the right answer. Let me tell you each and everything in a very brief manner. So you over here talking about interhalogen compounds. Interhalogen compounds are more reactive. Interhalogen compounds, if I just talk about, wait a minute, what has happened to this thing? It's the pen I've taken. Yes, now it's fine. So if I just talk about interhalogen compounds, they are more reactive than parent halogens, but it is less reactive than fluorine. Why? This is because the XX bond, okay, if I just talk about CLF bond, this is XX dash bond, in interhalogens is weaker than XX bond in halogens except FF bond. I think you are getting the point over here. Fine. So if I just talk about this particular bond between chlorine and fluorine, okay, it is a weaker bond in comparison to chlorine and chlorine. And because of which, since this bond is weaker, if I just talk about this bond is weaker, I'll say it will break easily, fine, and yeah, it will be very, very reactive then. Okay, got my point? Okay, so talking about over here, FCl, which is more polar, ClCl, which is non-polar, so it will be less reactive. Clear? That this is what I actually want to talk about. Well, if I just talk about the hydrolysis of interhalogen compound, so it's CXX dash plus H2O gives us HX dash plus HOX. So over here we are talking about that CLF plus H2O, CLF undergoing hydrolysis, so we are going to get HOCl and HF. Is the things clear to you? Fine. So I just want to say one thing, that all these, what all these I'm going to talk about, if I'm just saying, see over here, if I just talk about CLF, if okay, so all these interhalogen compounds, they actually undergo hydrolysis, giving the ion derived from the smaller halogen. Fine, and we actually get a hypohalite ion, okay, when we are taking the case of XX dash. Fine, is the thing clear? Talking about the reaction with water, so it's the fluorine, a stronger oxidizing agent, and hence we are going to get 4H positive, 4F negative and oxygen. So fluorine basically oxidizes water to oxygen. Fluorine oxidizes water to oxygen, whereas if I talk about chlorine and bromine, they react with water. Chlorine and bromine, yeah, they are going to react with water to form the corresponding hydrohalides. To form the corresponding hydrohalides, you can just have a look. Fine, hydrohalides and hypohalous acids. So this is what I actually want to talk about here. Fine. Well, if I just talk about the incorrect statement, it's option number D, which says that chlorine is more reactive than CLF. That is not the correct answer. It's the incorrect one. Okay. So Gaurav Singh, I think that it's actually clear. It's not option number A. Option number A is the correct answer. Fluorine is more reactive than interhalogen compounds. Fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine in aqueous solution, I told you. And on hydrolysis, CLF, the interhalogen compound, it forms HOCl and HF. It's only the chlorine which is less reactive than CLF basically. So option number D, statement number D is the incorrect statement. Isn't it? Yes. Hello Mr. Harsh. Good afternoon. Welcome to the class. So Gaurav, आपको ये answer clear हो गया है that you were actually marking the wrong option. It's option number D, the right answer for the question asked for. Okay. Done, done. Shall we move ahead? Okay. So here we are, and it's question number 2. Question number 2 says what? We need to arrange the following cobalt complexes in the order of increasing crystal field stabilisation energy, CFSE value. Okay, fine. Okay, good afternoon Mr. Putin.
Fine. So you need to talk about that. What we need to talk about, we are actually talking about crystal field stabilization energy. We need to actually arrange the cobalt complexes in the order of increasing CFSE value. So just let me know what is your answer for this particular question. Sudhanshu, is it option number A you are actually talking about for this question? Let me know about the same. Come on. Waiting here for your answers in the comment box. Sesha says it's option number A. Sudhanshu again says it's option number A. Okay, so I'm getting the two answers from you guys. Anyone else volunteering for this particular question? Come on. यार एक बात बताइए, मैं कुछ यहाँ बोलती हूँ, आपको सुनाई देता है कि नहीं देता? Just let me know. Fine, because I need to ask you. Like please answer me in the comment box. Otherwise I'll move ahead and you will say मैम आप बहुत जल्दी चलते हैं. आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मैं कैसे predict करूँ कि आपको आता है कि नहीं आता है? Fine. Ma'am, A and C are same. A and C if I just talk about. Oh, there might be some problem in this particular thing. No issues, we can reverse it. Yes, okay. So we can just do it. We can just reverse it like this. We can have this particular option then. Fine. Thank you for telling me. Okay, so it's A, B, C and D we are having with us. Okay, let me tell you one thing. Over here we are going to actually talk about strong field ligands and weak field ligands, isn't it? Yes, we are going to talk about the same. We are going to talk about these same basically. So, okay, Mr. Putin says option number A. Okay, option D. Mayank says option number D. So Mayank, I'll just mark it that you are the first one to give me the right answer. It's option number D basically. Let me tell you the answer of this particular question. देखिए आपने बहुत कुछ पढ़ा है CFSE में. Since obviously you are preparing for JEE Mains 2022, तो आपने coordination chemistry तो पढ़ा होगा. मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्लोरीन की, वाटर की, अमोनिया की और EN की, इनमें से सबसे ज्यादा strong ligand कौन सा है? Okay, strong field ligand कौन सा है? It's the EN. Fine. Ethylene diamine, I can say, okay, followed by ammonia, then it's H2O, and then it's fluoride. Fine. So what we can say is that this is the order when I talk about strong field ligand to weak field ligand. So En is a strong field ligand followed by ammonia, then H2O, and then F negative. That is absolutely clear. Okay, what we are actually having, it's CO, F6. And it's 3 negative, I guess, yes. And then it's CO, H2O, whole 6, and it's 2 positive. And then it's CO, NH3, 6 and 3 positive. And then it's CO, En, whole thrice, and 3 positive. Isn't it? Yes, this is actually the case going to happen over here. So what I want to say over here, if I just go by the way of strong field ligand cases, see, CFSE value जो होती है, crystal field stabilization energy जो है, इसकी जो value होती है, it increases as the strength of the ligand increases, okay? Also, this particular value increases. How it increases? It increases in the positive charge of the central atom, okay? Also, the CFSE value, okay, it increases with the increase in the positive charge on the central atom. Now, according to spectrochemical series, the order of the ligand strength, is En, NH3, H2O and F negative. So, what we can say that CFSE value of the given complexes, if I just talk about, it's A, B, C and D. CFSE value of the given complexes should be in which particular order? It should be A less than B, then C and then D. This should be the CFSE value order. But there is a twist over here. If I just talk about compound A, not compound A, it's a complex A. Now cobalt is in +3 oxidation state. Cobalt is in which particular oxidation state? +3 oxidation state. So if I just say between A and B, I'll say since CO is in +3 oxidation state. So +3 oxidation state जो मैं बार बोल रही हूँ, I just want to say over here one thing that high valent 3D complexes tend to be low spin. High valent का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर oxidation state जो cobalt का है, it is +3.
ठीक है। सो हाई वैलेंट 3D कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी इन लो स्पिन। अगर मैं कह रही हूँ CO इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ ये हाई स्पिन नहीं शो करेगा, इट इज गोइंग टू शो लो स्पिन, एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का जो CFSE वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इजंट इट? ठीक है। और एक और चीज मैं आपको याद यहाँ दिलाना चाहूंगी कि 4D एंड 5D कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हमेशा ही लो स्पिन होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहां पर लीगेंड वहां पर जो लीगेंड है वो वीक फील्ड लीगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। क्लियर है? तो यहाँ CO is in +3 oxidation state, it is in a high valent state basically, so it's a high valent 3D complex, so it to tend to be in the low spin, और इसी वजह से होना तो ऑर्डर वैसे ये चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्डर होगा it will be D, which is having higher CFSE value followed by C, then it will be A, and then it will be B. So it's BACD. This is the order. It's a BACD. Okay, this one. So this particular D complex, COEN33 positive, it is going to have the higher CFSE value. So moving ahead, so it's BACD. Option number D is the right answer to the question asked for. जिन्होंने भी option number A बोला है, it's absolutely wrong. It's absolutely wrong. यार ये तो बहुत ही एक बेसिक सी चीज है, जब हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है, तो वहां पर ये आता ही आता है, तो ये मिस आउट नहीं होना चाहिए था आप लोगों से, ठीक है। सो हियर वी go with question number 3, my dear ones. So I believe you are asking me, मैम एक डाउट था, सेंट्रल एटम जो कॉम्प्लेक्स में होता है वो कैसे डिसाइड होता है कि वो सेंट्रल एटम बनेगा? अरे ये if I just talk about COF63 positive, COF63 negative, so obviously CO is the central atom. अब कैसे क्या पता चलेगा? आप कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, फ्लोरीन जो हैं they are 6 basically, ठीक है, and cobalt is 1, so central atom हमारा cobalt है, fine. नहीं सुमंत, NTA ने अगर A दिया है, so it's not the right answer. Right answer will be D for this particular case. Fine. Okay, fine. There might be a problem in that, but it's option number D, the right answer for the question asked for. We'll be moving ahead and talking about question number 3, which is on the screen for you guys. And here we are with the assertion and reason type of the question. Yeah, Mr. Rockstar, abhay doubt mein hi doubt hai. Central atom is always a cation. That's absolutely fine. Central atom is always a cation. और कोई बात कुछ कहना चाहेंगे? माइक ने सही बोला. Fine. Chaliye, here we are with the another set of a question. Question number 3 in front of you. Barium carbonate is insoluble in water and is highly stable. The thermal stability of the carbonates, it increases with increasing cation size. तो बताइए इसका क्या जवाब होगा? Okay, just let me know इसका क्या जवाब होने वाला है. Come on dear ones, waiting for your answers. हाँ जी. शेषा says it's basically option number D. शेषा ने कहा है कि it's option number D, ma'am. Both A and R are true, and R is the true explanation of A. Barium carbonate is insoluble in water and is highly stable, and the thermal stability of the carbonates increases with increasing cation size. Okay. Sumant, आप जो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि मैम it's actually satisfying the first option, so let me tell you one thing over here. We'll be actually dealing with see over here CO was in +3 oxidation state and it's a transition element, and if I just say that high valent 3D complexes they tend to be in the low spin basically, so वहाँ पर हम वही डील करेंगे. So it's option number D to be the right answer for the question asked for. इसमें I think there is no changes to be made. शीलानाथ जी कह रहे हैं it's option number C, अभय कह रहे हैं it's option number A, मयंक कह रहे हैं it's option number A, and Veena Hedges saying it's option number 8. So my dear ones, let me move on to the solution now. Let's discuss this part of the question. Okay, fine, no issues. देखिए, let me tell you one thing about over here. More than one cation हो सकता है, it's not like that. देखिए ऐसे complexes होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ AgNH3, ओके, होल ट्वाइस, एंड दूसरा मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उसी के साथ में है, इट्स AgCN2,
ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के अंदर ऑब्वियसली वील बी हैविंग अ स्ट्रक्चर जहाँ पर Ag जो होगा वो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा एंड अमोनिया एंड साइनाइड लिगेंड्स की तरह यहाँ बिहेव करने वाले हैं, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा मिस्टर हाइपर गेमिंग, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, वील बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द रैपिड रिवीजन व्हेन आई विल कम अप विद द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट, that's the main thing, because since now we have actually ample amount of the time, so in rapid revision series I'll be coming with this particular topic of coordination chemistry, need not to worry about the same thing, fine। So chaliye let's talk about this particular thing। यहाँ बोला गया है कि बेरियम कार्बोनेट जो है it is insoluble in water and it is highly stable, fine, and जो reason है इसका ये बोला गया है कि the thermal stability of the carbonates जो होती है it increases with what, increasing cation size। देखिए बहुत इजीली मैं इस चीज को यहाँ पर बोलना चाहूंगी, साइज जो हमारा कैटायन का है इट्स एक्चुअली मोर, तो साइज बड़ा होने से क्या होगा, बेरियम आयन का जो पोलराइजिंग पावर है वो कम हो जाएगा, ओके। बेरियम आयन Ba2 पॉजिटिव का जो साइज है वो बड़ा है, इसीलिए उसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी, कम होती है, पावर कम होती है, इसीलिए एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि इट्स insoluble in water। अब यहाँ पोलराइजिंग पावर से जो मैं कहना चाह रही हूँ, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। जब आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, यस हर्ष ने बिल्कुल सही बात कही, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, ओके, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप तो क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, साइज ऑफ कैटायन क्या होता है, वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अब कार्बोनेट जो है, एनीवे जो कार्बोनेट आयन है वो हमारा एक लार्जर एनायन है, फाइन। अ स्टेबल लैटिस इज फॉर्म्ड व्हेन कैटायन एनायन आर ऑफ कंपेरेबल साइज। स्टेबल लैटिस कब बनेगा हमारा, स्टेबल लैटिस कब फॉर्म होगा ये बताइए, जब कैटायन एंड एनायन जो होते हैं दे आर ऑफ कंपेरेबल साइजेस, दे आर ऑफ कंपेरेबल साइज, ठीक है। इस बात को एकदम से गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है, फाइन है। सो कार्बोनेट जैसे मैंने बताया इट इज एनीवे लार्जर एनायन, और स्टेबल लैटिस इज एक्चुअली फॉर्म्ड व्हेन कैटायन एनायन आर ऑफ कंपेरेबल साइज, फाइन। एंड कैटायन कैटायन एनायन एनायन रिपल्शन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, फाइन। नाउ व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन बिकम्स कंपेरेबल एंड हेंस द लैटिस बिकम्स स्टेबल। सो हम कह सकते हैं हमारी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, और भी मैंने एक दो रीजंस आपको बताए थे, तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। अब अगर मैं बात करती हूँ इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर की, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा बेरियम कार्बोनेट है इट इज व्हाट, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब एक सॉल्युबिलिटी जो होती है ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, solubility of a ionic compound in a solvent, वो कब इंक्रीज करेगी, if the ions formed are stable, if the ions formed are stable enough not to react back with the counter ions to form back the ionic compound। हम एक पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कैसे जज करते हैं कि जब उसके आयंस जो हैं वापस से काउंटर आयंस के साथ में रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड ना बना दें, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड विल बी एक्चुअली वेरिंग डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट। यहाँ हम बात कर रहे हैं बेरियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो डिसोसिएशन रिएक्शन अगर मैं बेरियम कार्बोनेट का आपको बताऊं, बेरियम कार्बोनेट इन द सॉलिड स्टेट, और इसका अगर मैं डिसोसिएशन रिएक्शन बता रही हूँ, इट्स Ba2 पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, isn't it? ये बात जमी कि नहीं जमी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई। सो अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी रूल्स, अगर मैं सॉल्युबिलिटी रूल्स की यहाँ बात करती हूँ, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं कार्बोनेट के, दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर इनसॉल्युबल इन व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन, एक्सेप्ट with a few exception, except those in combinations with Li positive, Na पॉजिटिव कह लीजिए, NH4 पॉजिटिव कह लीजिए, K पॉजिटिव कह लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं Ba2 पॉजिटिव की, सो Ba2 पॉजिटिव एक्सेप्शन वाली लिस्ट में नहीं है, इसीलिए जो हमारा बेरियम कार्बोनेट है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। क्लियर हो गया। मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी कि जब एक पर्टिकुलर कैटायन का हमारा साइज बड़ा हो जाता है तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है और इसलिए वो वाटर में अंदर क्या हो जाता है, वो इनसॉल्युबल हो जाता है। क्लियर है, डन 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 डन। तो इस हिसाब से अगर हम देखें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, बोथ ए एंड आर वो ट्रू है, एंड आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है।
यस, शेषा ने बिल्कुल सही कहा। ग्रुप 2 कार्बोनेट्स जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एक चीज आप और ये भी कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जो हमारा लैटिस एनर्जी होता है और हाइड्रेशन एनर्जी होता है, अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाता है तो भी वो इनसॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर। डन 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 डन, क्लियर है? Okay, gaming. I promise you over here to all the students कि very soon, not this particular coming rapid revision series, but जल्द ही I'll be coming up with the topic of coordination chemistry, wherein I'll take this particular doubt of yours. So for now, just have a focus on the questionnaire parts, which I'm actually going to get for you over here. So moving ahead, and with all my energy, with all my enthusiasm, here I go with the next question, and it's question number 4, guys. Fine, so come on dear ones, cooperate with me and do listen to me whatever I'm saying over here. Reason being, कुछ अच्छी चीजें ही बताऊंगी, है कि नहीं, जो आपको शायद नहीं भी पता हो. Fine, so it's a particular session wherein you are boosting up your preparation for coming JEE mains, and I just want that all of my students should actually fly with the golden colors. Fine. Fine. So here we are with question number 4, and the question number 4 is in front of you. The number of non-ionizable hydrogen atoms. Number of what? Non-ionizable hydrogen atoms present in the final product obtained from the hydrolysis of PCl5 is what? Just let me know this particular answer. Just let me know the answer of this particular question. कितने non-ionizable hydrogen atoms present है in the final product that has been obtained from the hydrolysis of PCl5? Just let me know this. ये बता दीजिए, come on. हाँ जी, बताएं बताएं. So Harsh says that ma'am it's option number B. हर्ष ने बोला कि मैम यहाँ पर जो है it's option number B to be the right answer. हमें बताने हैं non-ionizable hydrogen atoms. याद रखिएगा. शेषा से 0. Okay, fine. हाँ जी. Come on dear ones. So भाई सेशन कैसा लग रहा है ये बताइए आप मुझे. अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है, if you actually like this particular session, please, if you are actually feeling that this particular session is boosting up your preparation, clearing some of the doubts which were actually not clear before, please hit the like button, subscribe the channel, and yeah, share it with your friends. Fine, so yes, ठीक है. It's 0. Absolutely fine. Very good dear ones. Very good. You are absolutely right. So अगर हम बात करें, when we talk about hydrolysis of PCl5, so it's PCl5 plus H2O that is going to give us POCl3 plus twice of HCl. Now this POCl3, again it's going to react with water, and the final product to be obtained is H3PO4 plus thrice of HCl. ठीक है? Fine. Okay. So I'll say, अगर हम बात कर रहे हैं H3PO4 की, जो जितने भी यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन्स हैं, जितने भी यहाँ हमारे हाइड्रोजन्स हैं, they are ionizable hydrogens. These are ionizable hydrogens. After ionization, अगर मैं बात कहूँ ionization की या dissociation of this particular acid, तो मेरे को मिलेगा 3H positive plus PO4 3 negative. तो भाई आप यहाँ देख लीजिए ना, जितने भी हमारे यहाँ हाइड्रोजन्स हैं वो सारे के सारे ionizable hydrogens हैं. वो सारे के सारे क्या हैं? ionizable hydrogens हैं. तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए. Fine. Is there any doubt? Just let me know the doubts. Yes, tell me. पता चल गया? PCl5 का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया, इनिशियली हमें POCl3 मिला. फिर क्या हुआ? अगेन हाइड्रोलिसिस हुआ और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, इट इज H3PO4. H3PO4 का स्ट्रक्चर सभी को पता है. And when we actually take this H3PO4 into the dissociation, तो हमें मिलता है 3H positive and PO4 3 negative. So obviously none of the hydrogen atoms are, I'll say, non-ionizable. All the hydrogen atoms are ionizable. Option number B is the right answer for the question. Fine. Shall we move ahead? आगे बढ़ें? Okay, fine. चलिए. Here we are with question number 5. Question number 5. चलिए. Question number 5 is a very good question over here. So, चलें बताएं इसका जवाब हमें.
PCl5 की ज्योमेट्री में मैम एक एक्सेप्शन है, क्या आप बता सकती है? PCl5 की अगर आप ज्योमेट्री जानना चाहें तो इट्स बेसिकली ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, तो आप इसकी ज्योमेट्री में क्या एक्सेप्शन जानना चाहते हैं? ठीक है, तो यहाँ देखिए, इट्स एसिडिक फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, एसिडिक फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम ferrocyanide gives a Prussian blue colored colloidal species. It is what? It is what? Acidic ferric chloride solution on treatment with excess of potassium ferrocyanide gives a Prussian blue colored colloidal species. हमारे पास excess में क्या है? What we do have in excess? It's potassium ferrocyanide. Fine, that is in excess, and it's acidic ferric chloride which is not in excess. Okay. तो देखिए यहाँ पर दिस इज द रिएक्शन वी आर गोइंग टू हैव FeCl3 plus K4 FeCN6 गिविंग अस KFe FeCN6 plus thrice of KCl. यहाँ पर क्या है कि जो फेरिक आयंस हैं, यहाँ पर फेरिक आयंस मैं आपको बताना चाहूंगी, सभी यहाँ फेरिक आयंस जो हैं सारे पोटेशियम आयंस को नहीं हटा पाएगा. यहाँ पर ये जो फेरिक आयंस हैं ये सारे पोटेशियम आयंस को नहीं हटा पाएगा क्योंकि फेरिक क्लोराइड इज एक्चुअली लेस इन कंपैरिजन टू दिस K4 FeCN6. ठीक है, तो एक आयरन, ओके, आई विल से 3 पोटेशियम को हटा यहाँ से हटा देगा. एक आयरन, एक Fe3 पॉजिटिव आयन 3 पोटेशियम आयंस को यहाँ से हटा देगा. 1 पोटेशियम आयन विल बी एक्चुअली रिमेन्ड एज इट इज. फाइन, इसीलिए हमारा जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेगा, कंपाउंड बनेगा, इट इज KFe FeCN6. इट्स प्रूशियन ब्लू. इट्स प्रूशियन ब्लू. फाइन, क्लियर है. एंड दिस इज व्हाट इज नोन टू बी एज कोलॉइडल स्पीशी. रीजन आपको बता दिया है कि ये क्यों बनेगा. अगर हमारा फेरिक क्लोराइड एक्सेस में होता देन इट वुड हैव बीन Fe4 FeCN6. Since it is not in excess, तो ये सारे पोटेशियम आयंस को नहीं हटाएगा. So we are going to have KFe FeCN6. Okay, so it's option number A to be actually answered the right one. And yeah, most of you have said the right answer. Most of you have said the right answer. हाँ जी, just let me know. बताएं. Tell me, anyone, any doubt? Mayank, Abhay, Shesha, Sufi. Just let me know. Shall I move ahead? आगे बढ़ें? Okay, fine. चलिए, here we are with question number 6 on the screen. It's for you. In which of the following molecules, strongest back donation of an electron pair from halide to boron is expected? In which of the following molecules, okay, in which of the following molecules strongest back donation of an electron pair from halide to boron is expected? Okay. So I'm getting the answers as option number D and B. Who says B is the answer? Sumant says that it's B the right answer. Shesha, Harsh says it's option number D. Okay, fine. So भाई ये तो बहुत easy peasy lemon squeezy question है. इसका जवाब तो आप लोगों को question देखते ही पता चल गया होगा. I believe इसमें तो किसी को भी कोई doubt नहीं होना चाहिए था इस question के अंदर. तो हमसे पूछा गया है strongest back donation of an electron pair from halide to boron is expected in. BF3 होगा इसका आंसर. It will be BF3. ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है. ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है. BF3 के अंदर देखा जाए तो बोरोन और फ्लोरीन यहाँ पर एक तरह से इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ओवरलैप होगा इट विल बी ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी 2p pi 2p pi. अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करती हूँ तो यहाँ पर ओवरलैप होगा लेकिन उतनी इफेक्टिवनेस से नहीं होगा जितना इफेक्टिवनेस से 2p pi 2p pi का हुआ था. सो क्लोरीन में कौन सा ओवरलैप हो रहा है? इट्स 2p pi 3p pi. ओके, 2p ऑफ बोरोन एंड 3p ऑफ क्लोरीन. ब्रोमीन में इट्स 2p pi 4p pi एंड आयोडीन में इट्स 2p pi 5p pi. बैक बॉन्डिंग एबिलिटी टुवर्ड्स बोरोन यहाँ पर हमें दिखाया गया है.
क्लियर है? ओके तो यहाँ पर एक तरह से आई जस्ट से अमंग द गिवन बोरोन ट्राइहैलाइड्स द एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन इज मैक्सिमम इन BF3 ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम. फ्लोरीन एटम के स्मॉल साइज की वजह से ये हुआ. जैसे ये देखिए हमारा BF3 है, ये BF3 है हमारा, ठीक है. अब ये फ्लोरीन से बोरोन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, बोरोन बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो देखिए ये जो यहाँ लोन पेयर्स थे हमारे पास, it's going to be here like this. Okay, then आगे देखिए it's double bond F, ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा. it's fluorine and it's fluorine. तो यहाँ से अब देखिए वापस से यहाँ पर डोनेशन हुआ and it got back over here. तो it's boron, it's fluorine, it's negative charge again, it's F, it's double bond F and positive over here. Fine. यहाँ से फिर दोबारा से it's donation that has taken place. Fine. And what we are going to receive, what we are going to get is this negative double bond F and a positive, and it's F, kind of like this is gonna happen over here. Anyone any doubt? हाँ जी बताएं. Anyone any doubt? चलिए, Mayank, are you there in the class? Mayank, Harsh, Abhay, Sheelanath, Shesha, Sumant. Okay, fine. Okay, Abhay, I have actually noted down. So not to worry. Okay, if possible, we'll do so. Fine. Ma'am, does the existence of PF3 is because of p-pi back bonding? हाँ, आप ये कह सकते हैं. यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बोरोन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. फाइन, तो बैक बॉन्डिंग तो यहाँ होगा ही होगा. ठीक है, यहाँ बैक बॉन्डिंग तो यहाँ होगा ही होगा. ठीक है, यस. तो चलिए, here we are, and in which of the following molecules strongest back donation of an electron pair from halide to boron is expected? Option number D is the right answer. Option number D is the right answer. Fine, cool. चलिए आगे बढ़ते हैं. Here we are with question number 7. आप खुद देख लीजिए कितने easy questions Phase-4 JEE Mains 2021 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे. इवन हमने जो कल सेशन लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें भी काफी इजी क्वेश्चंस थे, कुछ फैक्चुअल थे, है ना, कुछ स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पूछे हुए थे. सो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर हाउ इजी द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट्स जस्ट यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ. फाइन. So talking about question number 7, in polythionic acid H2SXO6 X325, the oxidation state or states of sulfur is or are. Okay, so it's the existence of BF3 because of p-pi bonding. Okay, so Mayank, I think the doubt has been clear. Mayank, doubt clear? Okay, fine. Fine. Good afternoon, Mr. Aakash. Good afternoon. चलिए. Okay. So, इसमें I am actually getting the answers as Abhay says it's option number A, Sumant says it's option number A, Aakash says option number A, 0 to +5. Okay, Aakash has said the right answer. It's 0 to +5. Good. Okay, Prithuraj says it's option number A. Angraj is saying it's option number A. Harsh is saying it's option number A. You all are right. It's option number A only, the right answer. Yes. Well, over here, if I just talk about polythionic acid, so this N is from 1 to 3. We can just say, fine. Okay, N is equals to 1 to 3. Moving ahead, your answer will be option number A. Well, let me tell you one thing. हमें X कहाँ से कहाँ तक लेना है? Question में given it's 3 to 5. It's 3 to 5. Okay. So यहाँ it's actually should be 3 to 5. Okay. So आप यहाँ पर structure draw कीजिए इस particular way के अंदर. पहले यहाँ पर you should have 3 sulfur atoms, then 4 sulfur atoms, and then 5 सल्फर एटम्स. ओके, तो अगर मैं यहाँ 3 सल्फर एटम्स की बात करती हूँ, इट्स OH, S, डबल बॉन्ड O, S, then it's S, double bond O, and OH. Okay, now if I just talk about for this sulfur atom and this sulfur atom, oxygen is having the oxidation state of -2,
-2, and hydroxide ion of -1. So it's -2, -2 and -1 is -5. So sulfur atom will be having the oxidation state over here of +5. Similarly over here it will be having the oxidation state of +5. Isn't it? Yes. Talking about, if I just talk about these sulfur atoms, so no charge is actually developed on these sulfur atoms. Why so no charge is developed on these sulfur atoms? Because they are bonded to same sulfur atoms. Okay, so it will be 0, 0 and 0 in this particular case. So you can just go ahead with any of the things to be asked over here. You'll find your answer as 0 and +5 only. Is it clear? Mayank, it's clear. Prithviraj is clear. Sheelanath ji, yes. So it's basically 0 and +5 oxidation stage to be here, and it's wait a minute, it's H2SXO6. Okay, fine. So it was fine. So it's 1, 2, 3 because it's SX and S is 3 to 5. Two of the S are involved over here in the bonding with double bond O. So it will be 1, 2, 3. It's actually absolutely right. I got confused. Sorry for that. Fine. So I believe सल्फर का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होगा वो रीजन मैंने आपको बता दिया. जो सल्फर एटम्स हैं दे विल नॉट हैव एनी चार्ज बिकॉज दे आर बॉन्डेड टू सेम सल्फर एटम्स, तो वहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो जीरो होगा. डन. चले आगे बढ़े. सो इट्स ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर. So my dear ones, before I move ahead and talk about the next question, make sure that you hit the like button, subscribe the channel for the notifications of the classes to be going to held in the coming future days to make you prepare for your JEE Mains 2022. Okay, and yeah dear ones, share this particular session as much as possible so that your friends can also be benefited out of this particular session. Moving ahead and talking about question number 8, and here's the question number 8 on the screen for you guys. So, in stratosphere, most of the ozone formation is assisted by. Tell me. Just tell me. Come on. I'm just looking to your chat only. Okay, good. Getting the answers. Fine. Yeah, this particular question belongs to EV, UV you are saying. Samran saying it's option number B. Okay. Fine. Okay, cool. Good, Mayank. Ultraviolet radiations. डायरेक्ट आंसर था. ये क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ से पूछा गया है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ से पूछा गया है? ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है. हाँ जी, EVS आई मीन से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछा गया है. एंड ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. ओके, फाइन. ओके, कूल. ओके, फाइन. अच्छा, एक चीज मैं एक्चुअली में बताना चाहूंगी. सिंस मयंक यू वर आस्किंग अबाउट वन थिंग, एक चीज जो है इट गॉट इनटू माय माइंड एंड उसके बारे में बताना चाहूंगी. देखिए, PCl5 के बारे में अगर आप पूछते हैं तो PCl5 की ज्योमेट्री तो इट विल बी ट्रायगोनल बायपिरामिडल. ज्योमेट्री में देयर इज नो एक्सेप्शन, बट इट इज एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल. इट्स एक्चुअली हैविंग द एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल. ये बात क्लियर रखना, ठीक है. क्लोरीन जो है इट्स बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लोरीन क्या है? इट्स एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव. फाइन. सो अगर आप देखें वहां पर PCl5 में तो ऑक्टेट रूल में ही यहाँ एक्सेप्शन आ रहा है. अदरवाइज ज्योमेट्री जो होगी इसकी इट विल बी ट्रायगोनल बायपिरामिडल. आई थिंक Mayank is listening to me. There is no exception to the geometry. It's a trigonal bipyramidal. That is what we are going to have. Fine. Well, if I just talk about and focus on this particular, hypervalent compound. Harsh is actually absolutely right to this particular thing. Yes. So I think Mayank, the things have been clear to you. Yeah, of course. So see, अभी अगर ज़्यादा explain करूँगी, so we'll be actually left behind with the session. तो उस पे फोकस करते हैं. ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि कहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम है, and I'll soon come back fine with the problems you are actually talking me.
Yes, chaliye. So here we are in the stratosphere. Most of the ozone formation is assisted by visible radiations, ultraviolet radiations, gamma rays, cosmic rays. So option number B the right answer. Well, ozone की अगर मैं बात करती हूँ, देखिए UV rays की बात की जाती है यहाँ पर. तो ozone जो है in the stratosphere is basically the product of UV radiations. Okay, ठीक है. Ozone जो है in the stratosphere is the product of UV radiations, fine, acting on dioxygen molecule. तो वो यहाँ हो रहा है. What we are getting free oxygen atoms में मिल रहे हैं. Free oxygen atoms are going to react with the oxygen and hence we are going to form ozone. So इसमें तो कुछ भी सोचने समझने वाली बात नहीं थी. Direct हमें अपना आंसर पता था. It is UV radiations only. Fine. Anything? Anyone? Doubt? No doubt? चलिए. Let's move ahead and let's talk about question number 9, which is in front of you on the screen. Here we are, the correct order. Okay, good, yes. The correct order of the ionic radii, the correct order of the ionic radii for the ions P3 negative, S2 negative, Ca2 positive, K positive, Cl negative. So, dear ones, just let me know what you want to say for the question asked for. I'm just actually seeing your comments in the comment box. Tell me, come on, tell me. Yes, guys, come on, tell me. So, Vijaya Naran saying it's option number C, Aakash is option number C, Sheila Naji says it's option number C, Rockstar Bhay says it's option number C. यार ये तो इतना easy question है ना कि 11th class में भी आप इस particular question को solve करते थे. ये इतना easy question है. The correct order of ionic radii for the ions P3 negative, S2 negative, Ca2 positive, K positive, Cl negative. यहाँ पर these all species are isoelectronic species. These all species are what? Isoelectronic species. Okay. Now for isoelectronic species, as what? As the nuclear charge increases. For isoelectronic species, as the nuclear charge increases, okay, what happens then? Radius decreases. Now greater the positive charge, lesser the size of the atoms, fine, and greater the negative charge, lesser will be the size of the ions, isn't it? Yes, that's absolutely fine. So according to it, if I just talk about isoelectronic species and talking about their ionic radii, so just only I have told you, for isoelectronic species, as the nuclear charge increases, their radii decreases, greater is the positive charge, then what? Lesser the size of the ion. Greater is what? Greater the positive charge, then what? Lesser the size of the ion. Okay, good, fine. And vice versa for the negative charge. So herein, without any doubt, it's option number C, the right answer to the question asked for. P3 negative having 3 negative charge, then S2 negative, 2 negative charge, then chloride ion, and then K positive and it's Ca2 positive, isn't it? Yes, yes, yes. So यहाँ पर ज़्यादा explanation की requirement थी नहीं, because सभी को यहाँ पर सब कुछ आता है for this particular question. ठीक है, fine. So it's option number C, the right answer for the question asked for. Moving ahead straight away to question number 10, and here it is on the screen for you. Potassium permanganate on heating. Potassium permanganate on heating at 513 Kelvin gives a product which is. Now, इसके बारे में आप मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में क्या विचारधारा है आपकी. Just let me know. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, guys? Just let me know. Bombard the chat box. Bombard the chat box with your right answers. Okay? Bombard कीजिए chat box को with the answers. I just want the right answers from you guys. No wrong answers. No wrong answer for this question. Just let me know. Waiting for you. So Divyanshu says it's option number A. Vijay saying it's option number A. Sheila Naji saying it's option number A. Okay, good, good, good. Good, fine. चलिए तो बात करते हैं. They are saying potassium permanganate, okay, on heating, fine, at 513 Kelvin gives a product which is paramagnetic in green, paramagnetic in purple, diamagnetic in colorless, and diamagnetic in green. Here I go with the answer on the board for you. Okay, तो यहाँ देखिए it's potassium permanganate. इसको हमने heat किया at about 513 Kelvin, and we are going to get K2MnO4. We are going to get K2MnO4. This K2MnO4, okay, what?
what should I say? Yes, it's green in color and it's paramagnetic. It's green and it is paramagnetic. Okay, well, if I just talk about oxygen, it's paramagnetic and colorless. It's paramagnetic and colorless. Fine. NTA का जो आंसर था for this particular question, NTA का जो आंसर था for this particular question, it was the very first answer. जो बोल रहे हैं ना ऑप्शन नंबर है वो NTA का आंसर था, लेकिन प्रोबेबल आंसर दोनों हो सकते हैं. ओके, दोनों कौन से? 1 and 2 दोनों हो सकते. देखिए हमें मिल रहा है ग्रीन एंड पैरामैग्नेटिक, ग्रीन कलर कंपाउंड एंड पैरामैग्नेटिक. ऑक्सीजन गैस जो है इट्स कलरलेस एंड पैरामैग्नेटिक, हम ये भी बोल सकते हैं. ठीक है, yes, 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 absolutely fine. That's cool. So here we are with the things going ahead, and it's option number A, the right answer for the question asked for. Ki yes. Due to this, I'm confused. Which should I choose? देखिए NTA का आंसर तो 1 है, पैरामैग्नेटिक एंड ग्रीन. ठीक है, लेकिन प्रोबेबल जो हो सकते हैं या मेजर प्रोडक्ट अगर आप कहें और हम कहना चाहें कि भाई ऑक्सीजन गैस तो हवा में उड़ जाती है, सो वी आर लेफ्ट विद अ ग्रीन कलर प्रोडक्ट एंड विच इज पैरामैग्नेटिक, तो या नो डाउट विल गो विद ऑप्शन नंबर ए. हम ये सोच के भी ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं. ठीक है, यस मयंक, एब्सोल्युटली फाइन. यस, मैं प्रोबेबल आंसर बता रही हूँ आपको. इट्स अ प्रोबेबल आंसर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. अब है इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है, इसमें तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट को हीट किया एंड वी आर गोइंग टू गेट पोटेशियम मैंगनेट बेसिकली. फाइन. ओके, प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन. तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ग्रीन कलर का प्रोडक्ट मिल रहा है एंड इट इज पैरामैग्नेटिक. एंड एज दिव्यांशु सेड कि K2MnO4 के अंदर मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज +6. ठीक है, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए. इट्स ट्वाइस. अगर मैं K2MnO4 की यहाँ पर बात करना चाहूँ तो इट्स बेसिकली ट्वाइस ऑफ K पॉजिटिव एंड MnO4 2 नेगेटिव. Isn't it? It's MnO4 2 negative. Okay, and you can just talk about the same. Yes. Fine. Okay. चलें. Shall we move ahead? Shall we move ahead? चलिए. Here we are. Option number A is the right answer, and we are with straight on to question number 11. चलिए क्वेश्चन 11 की बात करते हैं. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज हमारा सेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा? रीजन बीइंग यार क्वेश्चन ही ऐसे हैं, है ना. कितना रहेगा जेई मेंस में? अनित, ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि आपको पूछना चाहिए. ठीक है, यू नेवर नो कि ऑर्गेनिक ज़्यादा है या इनऑर्गेनिक ज़्यादा है, फिजिकल ज़्यादा है, या तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में भी आते हैं. बट I believe you should be actually have a hold on few of the important chapters जहाँ से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है एंड इजी भी है ना. Yes. तो चलिए, which one of the following lanthanides exhibit, which of the following lanthanides it's going to exhibit +2 oxidation state with diamagnetic nature? We have been given with atomic numbers of Nd, okay, Yb, LA and CE. फाइन. चलिए, तो बताइए, इसका जवाब बताइए. हर्षेद, इट्स ऑप्शन नंबर सी मैम. इज इट ऑप्शन नंबर सी? देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ Nd की, इट्स बेसिकली xenon, फाइन, विच इज देन 4f4 एंड 6s2. अगर मैं बात करूँ electronic configuration of Yb की, having atomic number 70, so it's a xenon, it's 4f14 and 6s2. Talking about the electronic configuration of lanthanum, having atomic number 57, okay, so it will be xenon, 5d1, 6s2. Talking about cerium, having atomic number 58, so it is gonna be the electronic configuration. It is 5d1, 4f1 and it is 6s2. Fine. And we are saying lanthanides that is going to exhibit +2 oxidation state. So अगर मैं +2 oxidation state की बात करूँ, that means loss of 2 electrons. So it is xenon and it is 4f4. So it's paramagnetic, okay, not diamagnetic in nature. Fine, this is the electronic configuration. I'm talking about Nd 2 positive.
Talking about YB2 positive, if I just talk about YB2 positive, so yes, over here we are going to have the electronic configuration which is xenon and 4f14. Each and every electron over here is paired, so I'll say it is diamagnetic in nature. What I'm going to say about it, it's a diamagnetic in nature. Fine, so yes, this is our right answer. Yes, Sufi ne sahi bola. Sufi ne bilkul sahi bola about this particular question. Yes, well, all of you have said the right answer, but there are some people who haven't. So talking about lanthanum, it's 57. 6, if I just talk about La2 positive, so what I'm going to get is it's xenon and it's 5d1. So it's unpaired electron, paramagnetic. Talking about this, loss of 2 electrons and it's C2 plus. So I'm going to get it's xenon and it's 5d1 and 4f1. So again, I'll say it's paramagnetic in nature, guys. So it's only option number B, the right answer for the question talked upon. Divyanshu, D nahi hai iska answer. It's not option number D. It's not at all D. आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, हमें डायामैग्नेटिक नेचर की यहाँ पर बात करनी है. No, it is not option number D, Divyanshu. So it's option number B, the right answer for the question. Okay. So चलिए dear ones, how's your Josh? Tell me about your Josh. Is the Josh high? Are you all energetic, activated, in an enthusiastic state or not? Are the doubts clear over here? Fine. Do you feel that this particular session is really very awesome and good for all of you to enhance your preparation for JEE Mains? If that's the thing, hit the like button, dear ones. Hit the like button, yes. And make sure that in the coming class, you are not late. You should be present before I come into the class, okay? You can say Mayank, yes, you can say, because from D block, I'll say that there are questions, do come. There are questions, the tricky questions, tricky ones, you can actually go ahead with them. Fine. So you need to practice a lot. D block के लिए हम कहेंगे yes, because देखिए वहाँ पर ना advance में काफ़ी सारे questions ऐसे होते हैं, colors से related होते हैं. You need to actually go with the reactions, tell about their paramagnetic nature, diamagnetic nature, whether they are colored or not, something like that. So आप D block को important मान सकते हैं. You can just have a thumbs up from me that yeah, D block एक advance के लिए it can be a scoring chapter 2. Fine. So here we are with question number. बताइए question number कौन सा? It's question number 12. ये question number 12 है जहाँ हमसे पूछ रहे हैं the number of SO bonds present in sulphurous acid. The number of SO bonds present in sulphurous acid, okay, peroxodisulphuric acid and pyrosulphuric acid respectively are. Okay, the number of S double bond O bonds, SO double bonds present in sulphurous acid, peroxodisulphuric acid and pyrosulphuric acid respectively are. ठीक है, just let me know. Come on dear one, बताएं इसका आंसर. Whether it's option number A, B, C or D. ठीक है, हाँ जी, come on, ठीक है. The number, चलिए मुझे आंसर्स मिल रहे हैं एंड ऑक्सो एसिड्स को कैसे रिमेंबर किया जाए, ओके फाइन. ऑप्शन नंबर सी मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग. सो टॉकिंग अबाउट सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, यार ये याद तो करना ही पड़ेगा ना कि भाई सल्फ्यूरस एसिड का क्या स्ट्रक्चर है. H2SO3. आप काफी सारे ऑक्सो एसिड्स को ले लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है. यस मिस्टर अभय, आई गॉट योर पॉइंट. Noted down, it's been noted, need not to worry. ठीक है, there are 2 months to go, so I can take this session, need not to worry. Fine, हाथ वाथ मत जोड़िए यार. So overhead sulphurous acid जिसका फॉर्मूला है H2SO3, तो आप यहाँ देख लीजिए S डबल बॉन्ड O and H. ठीक है, 2 OH हैं, 2 OH ग्रुप्स हैं. ये हमारा सल्फर है, ये डबल बॉन्ड O है. दिस इज H, दिस इज O, दिस इज H, दिस इज O एंड दिस इज O. फाइन, तो यहाँ हमारे पास 1 S डबल बॉन्ड O बॉन्ड है. टॉकिंग अबाउट पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज H2S2O8. ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ, S डबल बॉन्ड O, यहाँ है हमारा OH, देन इट इज ऑक्सीजन, देन S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH. तो आप यहाँ देख लीजिए हमारे पास कितने SO डबल बॉन्ड्स हैं. इट्स 1, 2, 3 and 4. Isn't it?
Yes, of course. हेलो मिस्टर क्वेश्चन सीरीज, वेलकम टू दिस सेशन। तो ये हो गए 4। बात करते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की। इट इज H2S2O7। H2S2O7, तो यहाँ देख लीजिए S डबल बॉन्ड O OH, फिर ठीक है, देन इट्स O, देन सल्फर डबल बॉन्ड O एंड OH। तो यहाँ कितने हैं? अगेन 4। तो यहाँ देख लीजिए इट्स ऑप्शन नंबर सी, जो आप लोगों ने मोस्टली कहा है। ओके, सभी लोगों ने कहा है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, आई मीन टू से इस पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में। दैट इज दिस ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, H2S2O7 ओलियम। यस अंकित, इट्स एक्चुअली राइट। ठीक है, चलिए हियर वी मूविंग ऑन, वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। डोंट स्लीप, स्टडी ओवर हियर, फाइन, डोंट बी लेजी, focus on the question now. So here we are, 1 mole of an octahedral metal complex, 1 मोल ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स का, विद द फॉर्मूला MCl3.2L ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ AgNO3 हमें क्या देता है? व्हाट इट गिव्स टू अस? 1 मोल ऑफ AgCl। द डेंसिटी ऑफ लिगेंड इज व्हाट देन? द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड इज व्हाट? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? What you actually mean by denticity and hapticity? I remember when there was my first class of inorganic chemistry, there was Aditya who asked me the difference between denticity and hapticity. Now is the time to actually talk about that particular question. So yes, denticity का मतलब क्या होता है? Number of donor groups. बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ, यस अंकित एब्सोल्युटली राइट, नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स ऑफ द सेम लीगेंड, number of donor groups of the same ligand that bind with a metal center, गुंजन ने सही बोला, गुंजन नहीं, गुंजन नो, you haven't said the right answer, it's the मिस्टर बैलेंस ने सही बोला, आकाश ने सही बोला, it's 2। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पर। तो डेंसिटी का मतलब पता चल गया, नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स ऑफ द सेम लिगेंड दैट बाइंड्स विद अ मेटल सेंटर, उसे डेंसिटी कहेंगे। हेप्टिसिटी के बारे में अगर डिफर करना चाहूं, द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ लिगेंड to a metal center via uninterrupted and contiguous series of atoms, जैसे कि हम फेरोसीन की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला फेरोसीन के बारे में अगर मैं यहाँ बात करूं, तो दिस इज माय फेरोसीन। तो यहाँ फेरोसीन के अंदर मैंने क्या बोला? हेप्टिसिटी की, द कोऑर्डिनेशन ऑफ द लिगेंड टू द मेटल सेंटर वाया अनइंटरप्टेड एंड कॉन्टिग्यूअस सीरीज ऑफ एटम। तो यहाँ वी डू हैव 2 लिगेंड्स एंड ईच लिगेंड इज बाउंड टू 5 कॉन्टिग्यूअस एटम्स। ठीक है, डन, ओके फाइन, गुड देन, नो इश्यूज मिस्टर अभय। चलिए, तो यहां मैंने आपको डेंसिटी और हेप्टिसिटी के बारे में डिफरेंस बता दिया। अब अगर यहां हमें मिल रहा है क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ AgCl, दैट मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में एक क्लोरीन होगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मूला आपको बताना चाहूं, इट विल बी MCl2 ट्वाइस ऑफ L एंड एक क्लोरीन हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। ठीक है, और जब ये AgNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा AgCl का 1 मोल और कुछ और भी कंपाउंड्स। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं इस चीज पे। कॉम्प्लेक्स हमारा ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है? इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब देखिए, ये मेटल है, ये क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन से अगर मैं बात करना चाहूं, 2 लिगेंड्स है क्लोरीन के, ओके। ठीक है, तो यहां से कोऑर्डिनेशन कितना हो गया? 2। और मैं कह रही हूं एक तरह से, what I'm saying that the coordination number for the octahedral complex जो कि ये है वो 6 है। that means ये जो मेरा L है, L ligand जो है, ये बाइडेंटेट ligand होगा, तभी coordination number 6 होगा। अगर ये जो मेरा ligand L मैं कह रही हूँ it is bidentate ligand, if I'm saying it's a bidentate ligand, ठीक है, तो bidentate ligand है और हमें डेंसिटी बतानी है। अभी बताया डेंसिटी क्या होती है। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब ये है कि एक ऐसा लिगेंड जहां से, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट इथाइलिन डायमीन, ओके, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट दैट, या फिर आप कह लीजिए अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सैलिक एसिड की,
इसकी, ठीक है। आप देख लीजिए, फाइन, अगर मैं बाइडेंटेट लीगेंड की बात करती हूँ यहाँ पर, जहां पर एक ही लीगेंड में आई हैव 2 डोनर एटम्स, इथाइलिन डायमीन की भी अगर मैं बात करती हूँ, इथाइलिन डायमीन की मैं बात करती हूँ, तो आई डू हैव 2 डोनर नाइट्रोजन एटम्स, तो वहां डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एक तरह से 2 हो जाएगी, ठीक है। ये बाइडेंटेट लीगेंड है, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 आएगा, सिंस इट्स अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इट विल बी 2। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, बाइडेंटेट लीगेंड है, यस, 2 डोनर एटम्स होंगे, यस, 1 Cl is counter ion, coordination number of metal is 6 in the octahedral complex, ये सारी बातें सही हैं, तो यहां हमारा जो होगा, the density of the ligand L, okay, number of donor groups of the same ligand, CH2, मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एक तरह से इथाइलिन डायमीन है, ये मेरा एक ही लीगेंड है, ठीक है। सो नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स ऑफ द सेम लीगेंड दैट इज गोइंग टू बाइंड विद द मेटल, ये भाई समझ में आया, आ गया, यस, गॉट इनटू योर हेड, यस, इट्स अ हेक्साडेंटेट लीगेंड, एब्सोल्युटली राइट अनित। तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर, नॉट ऑप्शन नंबर, इंटीजर टाइप ऑफ द क्वेश्चन था, तो वो 2 था। सो हेयर यू लुक फॉर नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर Cr C2O433 नेगेटिव S। चलिए भाई बताइए इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप मुझसे। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने हैं आपको फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, MAA3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके नंबर ऑफ आप ऑप्टिकल आइसोमर्स बता दीजिए कितने होंगे, कम ऑन डियर वंस, कम ऑन, ठीक है। तो अगर ये हमारा इस तरह का पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, शेषा ने कहा इट्स 2, अनित यू आर रॉन्ग, इट विल बी 2 बेसिकली। यहाँ कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होने वाला है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हमारे पास यहाँ पर 3 बाइडेंटेट लीगेंड्स हैं, और जो 3 बाइडेंटेट लीगेंड्स हैं दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स। तो यहाँ मैं कह रही हूँ 3 बाइडेंटेट लीगेंड्स अगर हमारे ये डिफरेंट प्लेन्स में हैं, तो यहाँ कहूंगी कि यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ भी कोई प्लेन सिमेट्री नहीं है। तो व्हेन 2 रिंग्स आर देयर, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक बार इसका बना के आपको दिखाती हूँ, इट्स, आप एक बार देख लीजिए क्या मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इट इज A and this, इट्स A and this and this, ठीक है। व्हेन 2 रिंग्स आर देयर अबव एंड बिलो द प्लेन, कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो वी आर गोइंग टू गेट 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स D and L फॉर्म, ठीक है। तो हेयर वी आर विद दिस पर्टिकुलर थिंग, यू कैन जस्ट हैव अ लुक, यही मैंने चीज आपको बताई थी ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। यस, वी आर गोइंग टू हैव 2 enantiomers, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में बताना चाहूँ, इट्स Cr, ओके, देन इट्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, oxygen over here, oxygen over here. I am drawing the structure which has been given to us. It's oxygen, it's oxygen. तो यहाँ देखिए it's C double bond O, C double bond O and this is C double bond O, C double bond O and this one is C double bond O, C double bond O and this, isn't it? Yes, ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज। तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ठीक है। one ring is above the plane, the other one is below the plane, so it is not going to have any plane of symmetry, so it's basically optically active, having 2 enantiomers, so I'll say it's basically 2, आपको लिखना है 2, the number of optical isomers possible for this particular complex is 2. Oxalato, yes, it's a bidentate ligand, absolutely fine. चलिए, here we move on without any delays and it's question number 15 in front of you. So the question is, the sum of oxidation state, you can just have a look over here, the sum of oxidation states of 2 silver ions, the sum of oxidation states of 2 silver ions in AgNH32 and AgCN2 complex is what? इसमें से एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स हमारा केटायन होगा, एक एनायन होगा। +2 कैसे हो जाएगा, हाउ इट विल बी +2, कैसे होगा +2? यू नीड टू टॉक अबाउट द सम ऑफ, ओके फाइन फाइन, सम, ओके फाइन फाइन फाइन, सम 2 है, ओके आई गॉट द थिंग। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of 2 silver ions in AgNH32 positive and AgCN2 complex is what? तो इसमें एक केटायन होगा, एक एनायन होगा, so it's AgNH32 plus and it is AgCN2
2 माइनस। तो यहाँ पर अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम सिल्वर की बात करूं तो इट इज X plus 0 for ammonia, neutral ligand 0, which is equals to, which will be actually equals to what? Plus 1 over here. So X is equals to plus 1 for this one. For this, if I just talk about X, minus 2, cyanide ion, Cn negative, so minus 2 equals to minus 1. So X is equals to plus 1. So we need to talk about the sum of oxidation state of 2 silver ions. So it will be 2. It will be 2. It is going to be 2. Yes. So जिन्होंने भी 2 बोला है, absolutely right. जिन्होंने भी 2 बोला है, absolutely right. Yes. Okay, fine. So my dear ones, this was all about this particular session. This was all about for this particular session. Fine. And I believe that you have learnt a lot from this particular session. काफी सारे doubts आपके clear हुए होंगे. And thank you for your all cooperation, maintaining the discipline in the class. Well, make sure whenever there is my another class on the coming Sunday, the rapid revision, be sure that you are on time. I want the punctuality of all of you. Fine. So be there in the class sharp at 3 p.m. We'll be meeting on Sunday for the rapid revision. Okay, thank you so much, Sufi. And my dear ones, thank you again. Learn a lot, practice a lot, the questionnaire session. Best of luck and stay safe at your home. Bye-bye, dear ones. We'll meet you soon on Sunday then.